Okay. अच्छा, so मैंने क्या आप लोग को पूछा था क्वेश्चन, a car is moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड. हाँ, पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड. बाद में क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में गया. तो एवरेज स्पीड कितना होगा, कितना होगा? आप लोग ने कैसे किया? 10 सर हाँ, 10 प्लस 20 मीटर पर सेकंड 20 बाई 2 ऐसा क्या किया आप लोगों ने? यस सर. 15 आया. यस सर, 15 मीटर पर सेकंड. ये गलत है, ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. This is wrong. Now what you will do, if you are asked average speed, आप लोग क्या करेंगे? First you'll find distance traveled. You'll find distance traveled by time taken. Okay. If you are asked average speed, you'll find distance traveled by time taken. You'll always use this one. आप हमेशा यही use कीजिए. You don't use anything else. Average speed is distance traveled by time taken. Always use this one. Okay. If you are asked average velocity, here you will ask displacement by time taken. Average velocity, displacement by time taken. आपको सिर्फ ये दोनों ही यूज करना है. You don't do anything else. If you are asked average speed, you will find distance traveled by time taken. If you are asked average speed, distance traveled by time taken. If you are asked average velocity, it is displacement by time taken. ठीक है जी सर. ये दो डेफिनेशन आपको याद रखना है. ये दो डेफिनेशन आपको याद रखना है. अगर सिंपली वेलोसिटी दिया या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, if you are asked simply velocity or instantaneous velocity, okay, if you are asked simply velocity or instantaneous velocity, then you write dx by dt. ठीक है. अगर velocity या instantaneous velocity, आप ये यूज करेंगे. एवरेज वेलोसिटी होने से आपको यही यूज करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. और कोई फॉर्मूला नहीं है. बहुत सारे किताब में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आप वो सब फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे. एवरेज स्पीड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है जी सर. ओके. वन प्रॉब्लम यू ट्राई. एक प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए. ये दो डेफिनेशन आप लोग ने लिखा है. ये दो डेफिनेशन, हैव यू रिटन दिस टू डेफिनेशंस? यस सर. आपको ये दो डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है. ओके. नाउ यू राइट वन प्रॉब्लम. A car is traveling at a speed of 10 meter per second for 10 seconds, and then at a speed of 20 meter per second for 15 seconds. Find the average speed of the car. ये ट्राई कीजिए आप लोग.
You got? Yes, sir. 12.8 meter per second, sir. आप फिर से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट पहले आप ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा आप लोग को, आप लोग डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिए। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। फर्स्ट यू रीड, अंडरस्टैंड, देन सॉल्व। ये देखिए, कार इज ट्रेवलिंग। हाँ, सपोज कार यहाँ से शुरू किया, 6/5 सर, यहाँ तक गया। यहाँ तक स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 10 सेकेंड। बाद में यहाँ से यहाँ तक गया, स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 15 सेकेंड। ये सब दिया हुआ है, ये देखिए ये सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया है, स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 10 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक गया, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये डिस्टेंस S1 है, ये डिस्टेंस S2। तो S1 कितना होगा? S equals to VT है, S equals to VT, S equals to VT. So S1, its V it's 10, T it's 10, 100 मीटर। यहाँ देखिए S2, V it's 20, T is 15, 300 मीटर। 300, sir. 300 meter. Yes, sir. और आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड। टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड हमारे पास फॉर्मूला किया था एवरेज स्पीड का, ये वाला, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड जब भी दिया जाएगा, ठीक है। सो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या है? इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ S1 प्लस S2, टाइम टेकन इज T1 प्लस T2। Yes, sir. 12.8. 100 plus 300 by 10 plus 15, so 400 by 25 कितना आएगा? 25, 400 by 25, 16, sir. 16 meter per second. 16, okay, 16 meter per second, 16 meter per second, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए आप लोग। हाँ, जब भी हमें एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड एवरेज स्पीड, हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यही यूज करेंगे, ओनली दिस वन। We'll find the distance traveled and we'll divide it by time taken. हाँ देखिए, यहाँ देखिए एवरेज स्पीड पूछा गया है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिंपली स्पीड पूछा जाता है तो ये करने से गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड फाइंड एवरेज, सपोज ये एवरेज नहीं है, सपोज ये एवरेज टर्म नहीं है, एवरेज टर्म नहीं है, फाइंड स्पीड ऑफ द कार, तो आप ये करने से गलत हो जाएगा, ये आप करने से गलत हो जाएगा, तब dx by dt आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओनली इफ यू आर आस्क्ड फाइंड स्पीड ऑफ द कार, तो ये करने से गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको dx by dt करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels a distance of 200 meter with speed 10 meter per second, and then a distance of
and then a distance of 1200 meter with speed. You do one thing at 1200 meter, nahi, आप एक काम कीजिए, and then a distance of 800 meter कर दीजिए. 800 meter with speed 20 meter per second. Find the average speed of the car. सर 16.6 ऐसा आता है सर. ठीक है, आप कम the technique same होगा आपका. एवरेज स्पीड यहाँ पूछा गया है, एवरेज स्पीड, so you'll have to find distance आपको, and time you'll have to find. या तो distance दिया हुआ है, सिर्फ टाइम निकलना by time taken, time निकलना है. सपोज यहाँ से शुरू किया, फर्स्ट 200 मीटर, ये 200 मीटर है S1, यहाँ स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. 10 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है S2 is 800 मीटर और स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ T S equals to VT फॉर्मूला यूज करने से T होगा S by V, S equals to VT. So T1 will be S by V1, 200 by 10, 20 seconds. और T2 होगा 800 by 20, कितना होता है? 40 seconds. Average speed, distance traveled S1 plus S2, time taken here T1 plus T2. ठीक है? So 200 plus 800 by 20 plus 40. So कितना आ रहा है? 1000 by 1000 by 60. 0 cancel जाएगा. 100 by 6. 16.66 ऐसा आता है सर. 16.6. 16.66. 16.678. जी सर. Okay. इजी है. आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी एवरेज स्पीड होगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होने से डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी होने से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और कोई भी फॉर्मूला आप लोग को यूज नहीं करना है. बहुत सारे टीचर आप लोगों को बोलेंगे कि आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए. बहुत सारी किताबों में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आप लोग यूज मत कीजिए. क्योंकि नीट हो या JEE हो, उनमें वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा.
जी सर। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? नहीं सर, ये तक अच्छा ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a car travels from A to B a car travels from A to B at a speed of 40 km/h. A car travels from A to B at a speed of 40 km/h and returns back on the same track and returns back on the same track at a speed of 60 km/h. Find its average velocity. Find its average velocity. सर, ये तो 0 हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट 0। सर, ये 0 हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। So हाँ average सर, velocity कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए एवरेज वेलोसिटी, अब फॉर्मूला लिखिए। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा सर। टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। अभी आप जी सर। देखिए, ये ए है एंड दिस इज बी। बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया है। हाँ, and returns back on the same track. Returns back मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया। So displacement कितना है? 0 हो जाएगा सर। 0 by t, 0 हो गया। Average velocity 0 हो गया। 0। Okay, समझ में यहाँ सबको? जी सर। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी हमें पूछा जाएगा, then we will use this one. We'll find displacement divided by time taken will be average velocity. जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा हम सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगा सर? यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आके पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आके पहुंच गया। जहां से शुरू हुआ वही पॉइंट पे आ गया। हाँ, रिटर्न्स बैक। हाँ, रिटर्न्स बैक, ये देखिए क्वेश्चन पे रिटर्न्स बैक है। जहां से शुरू हुआ वही तक आ गया। ठीक है, जी सर। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग, नेक्स्ट एक ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग एक ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एक आप लोग ट्राई कीजिए। The position time relation for a body moving along a straight line is given by the position time relation for a body moving along a straight line is given by
is given by x equals to 2t square plus 10t minus 5 meter. Find the average velocity in the interval 0 to 3 seconds. Find the average velocity in the interval 0 to 3 seconds. मिला आप लोगों को? सर जस्ट 1 मिनट सर, मिल रहा है। सर 22 मीटर पर सेकंड हो जाता कितना आया? सर 22 मीटर पर सेकंड। नहीं लग रहा है मुझे आंसर। आप चेक कीजिए एक बार। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सर मेरा 12.6 ऐसा आता है। हाँ चेक कीजिए। आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जी सर। हाँ, आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एंड हाउ डू यू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट, सो इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Initial इनिशियल to एंड फाइनल Final पोजीशन। तो इनिशियल मतलब है t0। अगर हम t0 पुट करते हैं -5 we'll x get minus initial position। कितना आ रहा है? -5 सर। -5 मीटर। फाइनल मतलब 3 सेकंड ये दिया हुआ है। अब t इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए, फाइनल पोजीशन आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ इस इक्वेशन पे? t इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए। सर 33 33 आ रहा है क्या? 3 square is 9 2s are 18। 33 आ रहा है क्या? चेक जी सर। कीजिए कैसे 33 आएगा। 43 आ रहा है। 43 आना चाहिए। चेक कीजिए। 43 मीटर आना चाहिए। आप लोग चेक कीजिए। इसी क्वेश्चन पे t इक्वल्स टू 3 ये पुट कीजिए। 43 मीटर सर, 43 यस सर 43 सर। 43 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये 0 है, इनिशियली यहाँ है, इनिशियली -5 पे है, फाइनली यहाँ है, फाइनल 40 फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा 43 माइनस -5 48 मीटर हुआ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट? जी सर। हाँ, अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कीजिए। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 48, टाइम इट्स 3 सेकंड। फिर से एक्सप्लेन कीजिए आप। 16 मीटर पर सेकंड आया आप लोगों को? जी सर। All of you check once you check. ओके, ये पोजीशन टाइम दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है पोजीशन टाइम रिलेशन, और हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी, पोजीशन टाइम इज गिवन एंड वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एंड वी वांट टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चाहिए। हाँ, डेफिनेशन टेल्स इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल मतलब t = 0। हम अगर t0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है -5, ये इनिशियल पोजीशन है, और t3 पुट करने से फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Next one question. This question is asked so many times. आप लोग का माइक म्यूट रखिए, बहुत सारे हैं आप। जफूर खान, आपका माइक म्यूट रखिए। जफूर खान, जफूर खान जी, आपका माइक म्यूट कीजिए। आप लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा। आपका माइक म्यूट नहीं रखने से प्रॉब्लम होता है दूसरों का। अच्छा, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए। वो क्वेश्चन क्या है? बहुत बार नीट पे पूछा गया है। नीट या पीएमटी, जेईई मेंस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन इज a person traveling in a straight line. A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for half of its total distance and with constant velocity v2 for the remaining half. For the remaining half, find its average velocity. Average velocity. ये क्वेश्चंस बहुत बार नीट पे पूछा गया है, जेईई में भी 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन।
ट्राई कीजिए आप लोग। Sir, B1 plus B2 by No, no. आप क्वेश्चन पढ़िए। A car, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity for first half. मतलब first half सर इसका आंसर सर V1T plus V2T by 2ST ऐसे होगा क्या? S1 S/2 S/2 first half second half। यहाँ स्पीड V1 है, यहाँ स्पीड V2 है, ठीक है। फर्स्ट हाफ में स्पीड V1, सेकंड हाफ में स्पीड V2। सो S इक्वल्स टू V by T, सॉरी S इक्वल्स टू VT, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो T1 विल बी S by 2 V1 और T2 will be S by 2 V2। Then average velocity, is total distance is S by T1 plus T2. S by T1 is S by 2 V1, T2 is S by 2 V2. S will cancel throughout. S will cancel. S आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेते हैं 2v1 v2, ये होगा v2 plus v1। So S distance है ना तो v1 plus ये आएगा। जी सर। सर हमें डिस्प्लेसमेंट सेट करना है सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा यहाँ। जी सर। हाँ देखिए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो गया यहाँ, ठीक है। फर्स्ट हाफ S by 2। सर ये फिर से सेम पोजीशन में नहीं आया सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम होगा? अरे यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, सर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, सर। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी है। जी सर। दोनों सेम हो गया। जी सर। Okay, next
सर वो सर वैसे सर फिर से एक बार सर समझा दीजिए सर जल्दी में सर। ये प्रॉब्लम को यस सर। अब देखिए ये दिया हुआ है, आधा डिस्टेंस दिया v1 वेलोसिटी से, बाकी आधा v2 वेलोसिटी से किया है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज s, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट s हो गया, टाइम t1 प्लस t2, और t1 यहां से निकल लिया, t2 ये फॉर्मूला हमने यूज किया टाइम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जी सर। यस सर। ओके नेक्स्ट आप लोग बताइए, सपोज एक स्ट्रेट रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, दो कार है, दिस इज कार ए, कार ए ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, this is car B, traveling in this direction, and this is a man, एक man है, man is at rest, man at rest है, car A moving at suppose 10 kilometer per hour, car B is moving at 40 kilometer per hour, सर कार है 40 एंड कार भी 10। car B 10, ठीक है, car A is traveling at 40 kilometer per hour, car B is at 10 kilometer per hour, man is at rest. Now if man looks at car A, this man looks at car A, he will see that A has a speed 40 kilometer per hour. Okay, if this man looks at car A, he will see it is 40 kilometer per hour. But if B looks at car A, अगर B कार A को देखते हैं, then what will be the speed as seen by B? सर 30 किलोमीटर पर आवर। 30 kilometer per hour. So actually, when you measure velocity of a body from another moving body, it is called relative velocity. Relative velocity. Relative velocity means velocity of a body as measured from another moving body. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एज मेजर्ड फ्रॉम अनदर मूविंग बॉडी। सर another moving or rest? सर only moving or what? मूविंग बॉडी, क्योंकि मैन अगर मेजर करेंगे तो मैन तो ओरिजिनल वाला ही दिखेगा 40। हाँ, मैन जब इसका वेलोसिटी मेजर करेगा, then he will see it is 40 only, the original one. But if B measured this one, B will see it as 30. So B जो measure करेगा वही relative velocity होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग को याद रखना है एक शॉर्टकट टेक्निक है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, शॉर्टकट टेक्निक है। सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन add to find relative velocity. Same direction add to find relative velocity, opposite direction subtract to find relative velocity. ये याद रखिए, सेम डायरेक्शन होने से ऐड करना है टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी,
Opposite direction होने से subtract करना है to find relative velocity. So suppose these two bodies, A is moving in this direction with VA. This body B is moving with velocity VB. Both the bodies are traveling in same direction. So यहाँ relative velocity होगा VA sorry. Plus, sir. नहीं यहाँ हमने गलत सर लिखा। यहाँ माइनस होगा सर, हाँ सेम डायरेक्शन होने से सब्ट्रैक्ट माइनस होगा। यस सर। हाँ सेम डायरेक्शन होने से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से आप ऐड कीजिएगा। सो VA minus VB, या VB minus VA, whichever is greater. हाँ ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम डायरेक्शन होने से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। अच्छा, opposite direction. Suppose A is moving in this direction with velocity VA. B is moving in this direction. Opposite हो गया with velocity VB, then relative velocity will be VA plus VB. ठीक है? या suppose ऐसा भी move हो रहा है. Suppose A is moving in this direction with velocity VA. B is moving in this direction with velocity opposite. यहाँ भी opposite direction हुआ, so relative velocity will be VA plus VB. Okay, so this is very important to remember. Very important to remember. ये आप लोग याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन होने से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से हम ऐड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। और रिलेटिव वेलोसिटी हम कब यूज करेंगे? जब दो बॉडीज होगा हमारे पास और दोनों मोशन पे है। When two bodies are in motion and if you are measuring the velocity of one sitting on the other, समझ में आया? सिटिंग होने से सर ऐड, सर सिटिंग होने से क्या होगा सर, ऐड होगा क्या? Sir, if a body is on another body, sir, it will be added or what? ठीक है, एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। Sir, if a body is on another body, it will be added or what? वो अलग हो जाएगा। If a body is on another body, तो क्या है कि आपका relative velocity 0 हो जाएगा। आप ये प्रॉब्लम ट्राई कीजिए। A train of length 150 meter is going towards north with speed 10 meters per second. A parrot is flying at 5 meters per second parallel to track with speed, parallel to track towards south. Find the time taken by parrot to cross the train. Find the time taken by the parrot to cross the train.
नहीं, आपका माइक म्यूट रखिए। क्लासरूम में जो सब है आप लोग अपना माइक म्यूट हमेशा रखिएगा। अगर आप लोग क्लासरूम में जो है, अगर आप लोग को आंसर देना है आप लोग चैट पे दे दीजिएगा। हाँ, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, देन यू ड्रॉ द फिगर। ट्रेन है, सपोज दिस साइड इज नॉर्थ, तो ये साउथ हो जाएगा। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, it's running towards north, this side जा रहा है, running towards north with velocity 10 meter per second. इसका लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर। ठीक है, a parrot is flying at 5 meter towards south, parallel to the track. मतलब एक पैरोट यहाँ है, आप ये ड्रॉ कीजिए पैरोट। सपोज ये एक पैरोट है, फ्लाइंग लाइक दिस। सपोज ये एक पैरोट है, पैरोट इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ, ये डायरेक्शन में फ्लाई हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। So यहाँ देखिए, both of them are traveling in opposite direction. ठीक है, so we'll have to add to find relative velocity 10 plus 5, 15 meter per second. Okay, both of them are in opposite direction, so we'll have to add to find their relative velocity. Okay, and now for the parrot to cross the train, ये ट्रेन क्रॉस करने के लिए देखिए पैरट क्या करेगा, यहां से यहां तक आना पड़ेगा। It should come from here to here. So relative to the train, distance the parrot should travel is 150 meter. S equals to 150 meter. ठीक है, so S we write as VT. S equals to VT. Velocity is the relative one. So S is 150. Relative velocity is 15 into T. So यहाँ से T आ जाएगा 10 second. चेक कीजिए आया कि नहीं आप लोग को। यस सर। समझा नहीं सर, ये एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, क्या बोला आपने? वो सर लास्ट वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा वाला? लास्ट सर, लास्ट मतलब सर वो सर एस कैसे नहीं करना सर। अच्छा, ये देखिए ट्रेन और ये पैरट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन और पैरट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? ट्रेन और पैरट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। जी सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये हो गया, ऐड करना है हमें।
और ट्रेन को क्रॉस करने के लिए पैरोट क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा ट्रेन को Yes, क्रॉस sir. करने के लिए। हाँ? तो कितना Yes, sir. डिस्टेंस गया? पैरोट यहाँ से यहाँ गया है, कितना डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ गया है ट्रेन को 150 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन ही जाना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस। टू कार्स are moving in same direction with a speed of 30 kilometers per hour. With a speed of 30 kilometers per hour. Full stop. They are separated from each other. They are separated from each other by 5 kilometers. They are separated from each other by 5 kilometers. Third car moving in opposite direction. Third car moving in opposite direction. Third car moving in opposite direction. Meets the two cars after an interval of third car moving in opposite direction meets the two cars after an interval of 4 minutes. 4 minutes. Find speed of third car. किसी का माइक अनम्यूट है, आप माइक म्यूट कीजिए। आप लोग पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए।
आप पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। सर यहाँ पर पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा ना सर? जी हाँ, पहले आप लोग क्वेश्चन कॉपी कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और समझने का बाद आप लोग एक काम कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। एक स्ट्रेट रोड है, टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। आप ऐसा ड्रॉ कीजिए, दो कार है, यहाँ जा रहा है, एक ये कार भी ऐसे जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट्स द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम? 0। 0। इन दोनों का बीच जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ है। क्या वो चेंज होगा डिस्टेंस? वो 5 किलोमीटर दिया हुआ है, नो वो सर। डिस्टेंस हाँ सर, it will be ये चेंज नहीं होगा, हमेशा 5 किलोमीटर ही रहेगा। अभी क्वेश्चन पे दिया है थर्ड कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक थर्ड कार है, इस साइड से आ रहा है, थर्ड कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, meets the two car after an interval of 4 minutes. Suppose third car इस साइड आ रहा है, थर्ड कार इस साइड पे आ रहा है, at any instant it is here. हाँ, थर्ड कार आ रहा है, at any instant it is here with velocity at any instant. So ये थर्ड कार जो है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? मीट द टू कार, पहले ये मीट किया, ये कार को मीट किया, पहले इस कार को मीट किया, बाद में आके इस कार को मीट करेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लिया इसने? 4 मिनट। 4 minutes. अच्छा, सो टाइम इज 4 मिनट, मतलब 4/60 आवर हो गया। और देखिए ये थर्ड कार जो है, ये थर्ड कार, हाँ ये थर्ड कार है, यह कार को मीट करने के लिए, ये जो कार है उसको मीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? रिलेटिव 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और ये दोनों कार के बीच अगर आप देखिएगा, ये कार और ये कार, ये दोनों के बीच आप देखिएगा ऑपोजिट डायरेक्शन उसमें मूव हो रहा है, ये दोनों कार देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 30 प्लस v। ठीक है, ये दोनों कार के बीच, ये कार और ये कार, ये दोनों कार के बीच 30 प्लस v रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ठीक है, यस सर। ओके। अभी s इक्वल्स टू vt हम यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू vt, s है 5 किलोमीटर पर आवर, v रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 30 प्लस v, टाइम है 4/60, 4/60 का मतलब क्या है? 1/15, 1/15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रिलेटिव v आ जाएगा।
आया आंसर आया 5 into 15 75 minus 30 45 आंसर किलोमीटर पर आवर में रहेगा क्योंकि ये देखिए ये किलोमीटर में था ये भी किलोमीटर पे था आर किलोमीटर सो किलोमीटर पर आवर का आंसर रहेगा सर क्वेश्चन को एक बार समझाइए सर ठीक से सर। हाँ क्या आप एक बार फिर से बताइए क्या बोला आपने सर वो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाइए। ठीक है ठीक हाँ क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है दो कार है ये कार और ये कार ये दोनों कार सेम डायरेक्शंस पे जा रहा है सेम डायरेक्शन सेम स्पीड सेम डायरेक्शन जा रहा है सेम स्पीड पे जा रहा है 30 और इन दोनों का बीच डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस 5 किलोमीटर इन दोनों का बीच जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ है थर्ड कार मूविंग है थर्ड कार है ये थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है ये थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन meets the two car after an interval of 4 minutes ये दोनों कार को मीट किया पहले इसको इससे मीट किया बाद में इससे मीट किया सो ये दोनों मीटिंग का टाइम सर इंटरवल 4 है मिनट 4 में दोनों को मीट किया गया सर 4 मिनट में सर दोनों को मीट किया इसको मीट किया ये कार को मीट किया 4 मिनट बाद इसको मीट किया ठीक ठीक है सर इस साइड से आ रहा है पहले इसको मीट किया इसको मीटिंग करने का 4 मिनट बाद इससे मीट किया पहले इससे मीट किया और 4 मिनट के बाद इसे मीट किया सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको 4 मिनट का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4 मिनट का टाइम लगा सो टाइम इज 4 मिनट 4 मिनट मतलब 4/60 आवर क्योंकि आंसर ऑफ आवर में दिया हुआ है ठीक है सो एस इज 5 किलोमीटर एस इक्वल्स टू और दो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो रहा है हाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो रहा है इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लिया हाँ रिलेटिव वेलोसिटी को हमने ऐड किया ओके one more problem two trains A and B of length 300 meter and 200 meter up running in same directions in parallel tracks with speeds 15 meter per second and 10 meter per second respectively. 15 meter per second and 10 meter per second respectively. Initially, A is just behind B. Find time taken by A to completely overtake B.
हाँ जी, मिला आप लोगों को? आप लोग ड्रॉ कीजिए, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। 2 ट्रेन्स ए एंड बी, आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए। मूविंग इन पैरेलल ट्रैक्स, 2 ट्रैक है पैरेलल। सपोज ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, moving like this with speed 15 meter per second. और A is just behind B, मतलब ये ट्रेन B है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन B है। इसका स्पीड दिया हुआ है 10 meter per second. And since they are moving in the same direction, relative velocity कितना होगा? They are moving in the same direction. 5 sir. 5 sir, 5 meter per 15 minus 10. 5 meter per 5 meter per second. And if train A is to completely overtake B, what distance it has to travel? अगर train 300 A, 300 meter. हाँ? 200 meters sir. देखिए ट्रेन ए यहाँ है, ये पोजीशन पे ट्रेन ए है। अब देखिए यहाँ ट्रेन ए है, पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेन ए यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। Yes sir. ट्रेन ए को यहाँ तक आना पड़ेगा पहले। Yes sir. हाँ? तो कितना डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक? अगर आके यहाँ था, ये पोजीशन पे था, यहाँ तक आ गया। 200 sir. 200 meter sir, pass kar. 200, okay. Length is 200 meter. So पहले ट्रेन ए को ये पोजीशन से ये पोजीशन तक आना पड़ेगा। ठीक है? Yes sir. 200 मीटर। उसके बाद इसको ओवरटेक करने के लिए देखिए, उसके बाद क्या होना पड़ेगा? That distance of advantage हो जाएगा sir. ट्रेन ए जब यहाँ तक आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ओवरटेक कर लिया। जब यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे ओवरटेक कर लिया। इसका लेंथ क्या है? 300 sir. 300. 300। सो देखिए क्या है, ट्रेन ए यहाँ था, यहाँ तक आ गया, यहाँ था, यहाँ तक आ गया। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 sir. पहले 200 गया, बाद में 300 गया। सो दिस रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव टू ट्रेन भी पहले 200 गया, बाद में 300 गया। सो कितना गया? 500 sir. 500 मीटर। हाँ, after that you can use S equals to VT. Sir answer 100 second or what? Answer? 100 sir. हाँ, 100 सेकंड। ठीक है। S equals to VT। उसके बाद आप S equals to VT यूज कर सकते हैं। S equals to VT और रिलेटिव वाला आप ले लीजिएगा। Relative distance is 500. Relative velocity is 5 into t. So t will be 100 second. Yes sir, 100%. ठीक है, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम है? No sir. सबका समझ में आया? तो आज हमने क्या किया? एक्चुअली 2 चीज पढ़ा है। We have studied average speed and average velocity. ठीक है? We have studied average speed and average velocity. हाँ, एवरेज स्पीड जब भी पूछेगा तो हम वही सॉरी कहाँ गया है? एवरेज स्पीड जब भी हमें पूछेगा तो we will use this one, and for average velocity we will use this one. Will not use any other definition. हाँ, कोई भी डेफिनेशन हो तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? हमने क्या पढ़ा था? ये रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी हम कब यूज करेंगे? इफ वी मेजर मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अनदर मूविंग बॉडी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एज मेजर्ड फ्रॉम अनदर मूविंग बॉडी। अनदर मूविंग बॉडी। देखिए यहाँ ए का वेलोसिटी हम बी से मेजर करें तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अगर ये मैन मेजर करते हैं देन इट विल नॉट बी रिलेटिव वेलोसिटी, इट विल बी द एक्चुअल वन। ठीक है, दोनों बॉडी मोशंस पे है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे, नहीं हम इसको एक ही यूज करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? सर एक ट्रेन जब और एक ट्रेन को सर ओवरटेक करेगा तो उसका लेंथ और दूसरा का लेंथ दोनों को साथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बोला कि एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को ओवरटेक किया तो? सर हाँ, दोनों का लेंथ रिलेटिवली देखिए, रिलेटिवली इसको कब ओवरटेक होगा? ये ट्रेन है, सपोज ये ट्रेन है, कब ये ओवरटेक होगा? जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ओवरटेक हो गया। ठीक है, ट्रेन यहाँ था, ये ट्रेन यहाँ था, जब यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे कि ओवरटेक कर लिया बी को। तो रिलेटिव टू बी कितना डिस्टेंस गया? पहले 200 जाना पड़ेगा, बाद में 300 जाना पड़ेगा, रिलेटिव टू बी। जी सर। जी सर। ओके Okay, so we will stop here today. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.